So वलीद, I have a question. मेरा एक सवाल है। इस एग्जाम में कुछ एग्जाम्स के मॉक पेपर्स देख रहा था, तो मैं क्वेश्चंस के देख रहा था। दोस्त जो आ रहे हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग एडवांस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, तो इसके कोई मॉक पेपर्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं टेस्ट के, या कितना टाइम होगा टेस्ट तक, या आई मीन कुछ बताओगे इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली वो वाली चीज़ जो है ना, वंस वी आर डन विद Azure स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स ना, तो उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन डम्प्स या जो भी हमारे पास मॉक पेपर्स अवेलेबल होंगे, उसके हिसाब से वी विल फाइंड अ वे टू कवर सम एसेंशियल मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में आपको क्वेश्चन किया जा सकता है इन योर सर्टिफिकेशन एग्जाम। जिनका अभी मशीन लर्निंग का मतलब बैकग्राउंड ना हो ना, उनको थोड़ा सा हमेशा यही लगा करता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में वहाँ पे बात की जा रही है, या काफ़ी डीप एंड है वहाँ पे मशीन लर्निंग का। हाउएवर यूजुअली मतलब इस तरह का केस नहीं होता। काफ़ी मशीन लर्निंग के काफ़ी सिंपलर या बेसिक किस्म के कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। तो वी विल डेफिनेटली फाइंड टाइम टू कवर दोज, or we will but towards the end of the course, or we will also find and provide some practice exam for you guys, जिसके अंदर आप एक्चुअल के अंदर आ रहे होंगे सर्टिफिकेशन एग्जाम में, जो एजूर आपको प्रोवाइड करेगा, उस किस्म के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट यू कैन जज योरसेल्फ, सो दैट वी कैन सी कि कौन से एरियाज हैं जो आपके वीक हैं और कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। Okay, so lab के लिए first of all I have already created a machine learning workspace here, और उसके अंदर मैं एक compute instance भी पहले से create करके रख चुका हूँ, और उस compute instance के अंदर मैंने notebooks और data वगैरह भी upload किया हुआ है, कर दिया हुआ है, और I'll jump right into the the notebooks available, और उन notebooks के अंदर जो कोड है उसके ऊपर बेसिकली उसे रन करके I'll give you a walk through, ताकि कम से कम टाइम के अंदर उसे खत्म किया जा सके। So I'll launch the Jupyter for whichever machine I've created, और उस Jupyter के अंदर मैंने कुछ अपना कोड यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, राइट। Okay, so first thing we are going to talk about is compute, और compute के अंदर हमने basically दो चीज़ें डिस्कस की compute context के अंदर, कि एक आपकी environment होती है और एक आपकी होती है आपका compute targets, right? तो हम इन दोनों चीज़ों को Python कोड के थ्रू मैनेज करना सीखेंगे। Azure की जो SDK है environment है उसके थ्रू इन्हें manipulate करते हैं, right? So first of all, we need to, I'll just reset the kernel and clear the output so that you can see it happening for the first time. First of all, you connect to your workspace. Workspace से connect किया, again हमारे पास यहाँ पे भी, ताकि learning curve कम से कम हो, we are using the same data set which we used last time. We're using the banknotes data set. और इस डेटा के ऊपर जो मशीन लर्निंग डेटा सेट्स क्रिएट करने वाला काम है, ये हमने लास्ट टाइम किया था कि डेटा स्टोर्स और डेटा सेट्स कैसे मैनेज करनी है। आई जस्ट हैव अ क्विक स्क्रिप्ट जो कि इस बैंक नोट्स वाली फाइल्स को अपलोड करके उससे टैबुलर डेटा सेट क्रिएट कर रहा है, अगर वो डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। अगर है तो फिर सेम डेटा सेट को यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज, अब मेरे पास
वो डेटा सेट यहाँ मेरे पास अपनी इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल है. व्हाट आई वांट टू डू इज अपना एक एक्सपेरिमेंट की वही स्क्रिप्ट एक जनरेट करता हूँ मैं. बेसिकली मैं इसके ऊपर वही अपना एक क्लासिफिकेशन मॉडल में ट्रेन करना चाह रहा हूँ जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड है. और उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड ट्रेनिंग के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है बैंक नोट्स ट्रेनिंग. इसके ऊपर हमने लास्ट वीक काम भी किया था. सो मेरे पास सेम स्क्रिप्ट है but now I want to use environments to be able to train this. I want to be able to define an environment and then utilize that environment in this training process. So how will I go about it? First thing we're doing is we're importing environments and getting content. मैंने Azure के अंदर अपनी वही जो environment का पैकेज मैंने import किया उसके साथ मैंने class object instantiate कर दिया. और अगर if I wanted to go for a user managed environment then I would have set this as true. I would have set bank and .python .user managed dependencies is equal to true. Then I would have had to define each and every package by myself. Right now, we don't want to do that. We want to let Azure manage dependencies. So अभी हमने इसे false. Second option that is available to you guys is कि आप अपनी environment के को as a Docker image build करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. You also have the option अगर आप बिल्कुल अपने एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं डेव टेस्टिंग कर रहे हैं सिंगल अपनी मशीन के ऊपर तो you also have the option to turn this off ताकि आप डॉकर एनवायरनमेंट बिल्ड करने की बजाय सिर्फ कॉन्डा एनवायरनमेंट बिल्ड करें और उस पाइथन एनवायरनमेंट को यूज कर लें जो कॉन्डा ने बिल्ड किया है rather than building a docker container and then running that docker container. तो right now we want to enable the docker container. हम चाहते हैं कि हम देखेंगे docker containers इसके अंदर कैसे क्रिएट होंगे कैसे बिल्ड होंगे मैनेज होंगे. बैंक नोट्स के इसी डेटा सेट को ट्रेन करने के लिए इसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम कॉन्डा की कुछ डिपेंडेंसीज जो हैं एनाकोंडा के वी वांट साइकिट लर्न फ्रॉम कॉन्डा और हम पिप के हमें ये पैकेजेस चाहिए. रिमेंबर Azure ML डिफॉल्ट से हमें उसकी सर्विंग की कैपेसिटी मिलती है कि वेब सर्विस बना के हम इसे होस्ट कर सकते हैं और Azure ML डेटा प्रेप पांडास से हमें ये कैपेसिटी मिलती है कि हम टैबुलर डेटा सेट्स को डायरेक्टली पांडास के डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर रीड कर सकते हैं. बैंक नोट्स पैकेजेस को हम डिफाइन कर देते हैं एज कॉन्डा डिपेंडेंसीज और फिर ओके कुछ लोगों को मेरा ख्याल है ये स्क्रीन देखने में एक इश्यू हो रहा है. आई ट्राई टू जूम इन सो दैट यू कैन सी इट बेटर. राइट. आई थिंक दिस मच इज इनफ. राइट. सो मैंने अपनी जो एनवायरनमेंट बिल्ड की उसके अंदर मैंने कॉन्डा डिपेंडेंसीज यही वाली सेट कर दी जो भी मैंने यहाँ पे बिल्ड की हैं और now this is an environment I have. Right, I'll run this here. So now after this step मैंने ये सारी की सारे पैकेजेस डिफाइन करके अपनी उस एनवायरनमेंट के अंदर के साथ बाइंड कर दिए. Now I want to use this environment to run the experiment. जो भी कोई एस्टिमेटर मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मैं इससे यूज करना चाहता हूँ. तो वर्क स्पेस के अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना वो बैंक नोट्स का डेटा सेट रिट्रीव किया. एस्टिमेटर एक हमने बिल्ड किया एक जेनेरिक एस्टिमेटर. दिस इज नॉट अ साइकिट लर्न एस्टिमेटर. एसके लर्न एस्टिमेटर भी हमने यूज किया हुआ है. दिस टाइम वी आर गोइंग टू फॉर जेनेरिक एस्टिमेटर टू शो हाउ फिनिशन का जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मैंने जो अर्लियर आई बिल्ट दैट बैंक नोट्स एनवायरनमेंट आई जस्ट पास दैट हियर और बाकी मेरे इनपुट्स के अंदर मेरा डेटा सेट आ जाता है. मेरा का फोल्डर आ जाता है जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट अवेलेबल है और स्क्रिप्ट के जो डिफरेंट मेरे पैरामीटर्स हैं
वो आ जाते हैं जहाँ पे मैंने अपना कोई पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, लाइक रेगुलराइजेशन, लाइक लर्निंग रेट, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। और जो मेरी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट है, एंट्री स्क्रिप्ट, उसका नाम आ जाता है, एंड दिस इज हाउ आई बिल्ड एन एस्टिमेटर, and using this estimator I then build an experiment and submit it using this estimator configuration, Excuse me, Philip. right? And then I Sorry to interrupt you. Could you please zoom in? कुछ लोगों को font की वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, तो उनको नजर नहीं आ रहा. Thank, already I thank hope you. किसी को ओके सो अब मेरा एक्सपेरिमेंट रन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट रन के अंदर जो एनवायरनमेंट पास किया है उसके अंदर वी हैव डिफाइंड एक्सप्लिसिटली कि वी वांट टू बिल्ड अ डॉकर कंटेनर फ्रॉम स्क्रैच, और इस एनवायरनमेंट को हम सिर्फ एज अ पाइथन एनवायरनमेंट नहीं बल्कि एक एक डॉकर इमेज के तौर के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। तो दैट इज एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स हैपनिंग हियर। और इस केस में मैं एक रन पहले कर चुका था जिसकी वजह से वो डॉकर इमेज पहले क्रिएट हो चुका था। The Docker image had already been cached in the Azure Container Registry, और attached to जो मेरे पास कंटेनर रजिस्ट्री थी उसके अंदर वो अवेलेबल था, जिसकी वजह से द रन वाज कंप्लीटेड रियली फास्ट, और मेरी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट जो सारी की सारी रन हुई है उसकी आउटपुट मुझे सारी की सारी यहाँ पे अपने लॉग्स के अंदर नजर आ रही है। एक्यूरेसी, AUC value, and whatever other logs were thrown here to handle the environment and handle the running of the code. So we now know how to use an environment within an estimator to run a training code, right? The next thing we want to do is, what if we want to register this environment in our workspace? तो उसका simple तरीका ये है कि just reference that environment object and call dot register object on that, और आपको इस किस्म का एक JSON response मिलेगा जिसके अंदर you will see कि आपके पास different frameworks की जो different आपकी वो आ रही हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, आपकी डिपेंडेंसीज आ रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मैनेज होती हैं। देयर आर नो डेटाब्रिक्स डिपेंडेंसीज, मे बी दिस बेस इमेज फ्रॉम डॉकर दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि व्हाट नेम यू हैव फॉर द बैंक नोट्स एक्सपेरिमेंट, बट पाइथन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि व्हाटएवर पिप डिपेंडेंसीज जो मैंने वहाँ पे बताई थी वो इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे नजर आ रही है। सो एनवायरनमेंट डिफाइन करने का मुझे ये फायदा हो गया कि इन अ सीरियलाइज्ड फॉर्मेट एक तो मैंने उसका रिकॉर्ड रख लिया, सेकेंडली ये अब एनवायरनमेंट मेरे पास रजिस्टर्ड है इन माय वर्कस्पेस, और ये इसके अगेंस्ट जो डॉकर कंटेनर बिल्ड हुआ है उसका कैशे भी अब मेरे पास मेरी वर्कस्पेस के अंदर अवेलेबल है, कैन बी रीयूज्ड। अगर मैं कभी भी इस सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस सेम एनवायरनमेंट डेक्लेरेशन के साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो हमने अभी लोकल के ऊपर सारा रन किया, इसके लिए जो हमारा कंप्यूट टारगेट था दैट वाज लोकल, राइट? इस एस्टिमेटर के अंदर हमने डिफाइन किया था कि रन इट ऑन द लोकल इंस्टेंस व्हिच इज आवर कंप्यूट इंस्टेंस, जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई थी। व्हाट इफ जो सेकंड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था वो ये कि हमारे पास अगर डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है और उस सिनेरियो के अंदर हमें एक क्लस्टर पूरा यूज करना पड़ता है, तो व्हाट इफ आई वांट टू रीयूज दिस एनवायरनमेंट, व्हाट इफ आई वांट टू रन दिस एनवायरनमेंट ऑन अ रिमोट कंप्यूट टारगेट। उस सिनेरियो के अंदर मेरे पास कोई ना कोई कंप्यूट क्लस्टर के ऊपर मैं इस एनवायरनमेंट को रन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ क्लस्टर फॉर दैट। अगर मैं अपनी कंप्यूट अपने मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर कंप्यूट के अंदर जाके मैं क्लस्टर्स देखूं, आई डोंट हैव एनी क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स हियर, तो मैं यहाँ से एक क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ।
जहाँ से अपनी मशीन लर्निंग इंस्टेंसेस मैं डिफाइन कर दूंगा, मशीन टाइप डिफाइन कर दूंगा. द अदर वे टू डू इट इज कि मैं अपनी एसडीके के अंदर ही कंप्यूट टारगेट और ये वाले ऑब्जेक्ट्स यूज करूँ, एसडीके के फंक्शंस को यूज करूँ और यहीं से अपना कंप्यूट क्रिएट करूँ. So for instance, I want to create a compute cluster named CC, और अगर इस नाम का compute target पहले से available है, then it's just going to throw me that print statement. Except अगर ये ना available हुआ तो फिर already एक नया cluster provision कर दिया जाएगा with this VM type, और maximum इसके nodes 2 available होंगे, राइट. और मैं इसके साथ अपनी एसडीके से एक क्लस्टर क्रिएट करता हूँ. यू विल सी के एज सून एज आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अगर मैं अपने कंप्यूट क्लस्टर की इंस्टेंस को रिफ्रेश करूँ, स्टार्ट शोइंग मी कि वो एक क्लस्टर डिप्लॉय किया जा चुका है. द वन थिंग that you'll see is कि इस क्लस्टर के अंदर अभी बिजी नोड 0, आइडल नोड 0 और इसके अंदर टोटल नोड्स भी हमारे पास 0 आ रहे हैं. अब वो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पे हमने सिर्फ मैक्सिमम नोड्स 2 डिफाइन किए हैं. अगर हमने मिनिमम नोड्स भी कोई डिफाइन किए होते तो वो नोड इमीडिएटली क्रिएट करके इन इफेक्ट आ जाता. So now that cluster has been created, I want to run this experiment जो कि अभी मैंने ऊपर एक ट्रेनिंग स्क्रिप्ट वही वाली I have a question here. The real-time environment, sure, and as you are moving from right, moving to the cluster because of the volume of data, can it be yes, auto-configure that it can move to the, although we develop this script in Python, and it's based on the auto-configuration that once the load increase, it automatically shift to cluster. Is this possible, or we have to manually observe, keep on observing? So, instance to compute cluster is only designed for dev test environment. It is not at all advised the for production environments, right? So, अगर आप dev test के अंदर काम कर रहे हैं, if you're working in dev test, then your team is already manually doing most of the stuff. They are using that single instance for training purposes, not for serving their customers, not for serving the predictions to actual live applications, right? So in this instance, what we can do is the closest thing we can do is we can set a minimum number of nodes. We can define a compute cluster. We can set a minimum number of nodes and we can set a maximum number of nodes for that cluster. For instance, if I try to create a new compute cluster here, you will see that there is a provision for writing minimum number of nodes and maximum number of nodes here. If I set my minimum number of nodes as 1 and max as say 10, right? Then then this is exactly the functionality that you just described, that if there is no load, then it will only use one VM instance. But as the load on the machine learning application increases, it will slowly add more and more nodes to the cluster. But you will have to start with a compute cluster instead of a compute instance. The instance. No, the point is here that it's a matter of the cost actually. How can I figure it out? My assumption or my understanding is that my development team, without knowing that there is a need or not, they are moving or using the cluster environment. So it's a matter of cost. So that's why I want to determine whether there is a situation required, some kind of the pop of something that I can observe or parameter, then something is coming up from the system. Then I say, okay, let's move to the cluster. Why shall I invest, cost here for this, activity or reserve cost? This is my understanding.
So I'll just give you a rule of thumb. If your data set is in the GBs, then you probably want to go for the cluster, because a single machine instance probably won't be able to handle that. But that is a very simplistic kind of heuristic that you can rely on. Obviously, there are more constraints. There are always processing constraints involved, which determine how many machines you will be able to use if you are going for advanced machine learning techniques, if you're going for complex machine learning models like deep learning models. Uh, but yes, if you have a data set that is lesser than a GB, then it is probably okay to tell your team just use the compute instance. But if it is more than a couple of GBs, then you probably want to move to the cluster and set a minimum and maximum number of nodes for that, so that it can auto scale. Getting back to the demo, so now we can define the experiment on the compute cluster that we've just created. We have that registered environment. We just registered that environment here. And we get that environment using the name of the environment from the workspace. And we set the script parameters and the estimator and everything, just like we've said before. But this time what we do is, instead of compute target local, the only change we've made is we've set a compute target with our cluster name that we just created here, right? And with that cluster name, I can run this experiment. And while this experiment runs, I can even monitor this from either these logs or directly from the machine learning studio. So the first thing you notice here is the compute target state is showing the status of resizing, 0 out of 1, right? This is happening because earlier the cluster was idle, and we just and the cluster downsized to 0 instances because it wasn't being used at all, and the minimum number of nodes was 0. So it released all machines that it was using. But now that there is requirement for a machine, then the first thing it does is it resizes the cluster size. It tries to add the machine. First the machine will be added, then the Docker image will be copied to that machine, it will be deployed, and then the experiment will be run on top of that. So uh, so the sole purpose of not setting a minimum number of nodes or setting a minimum number of nodes to 0 was so that I could show you how this is happening. Obviously it takes a bit of time because we are using a compute cluster, and because it is uh, it is an environment where the entire machine has to be set up. That is why it does take a little bit of time. If I already had a minimum number of machines set to 1, where the machine would have been ready just for execution, and it would have taken lesser amount of time. Still resizing. So now that the machine has been resized, the cluster has been resized, the machine was ready.
Then the ACR details was file was executed, and the image was prepared, the machine was prepared, it was copied, and uh, then looking at that is dedicated to basically the Docker image gets copied and the environments gets set up, and once the environment is set up, then the experiment starts running and it executes. So I guess while we wait for this to finish, that is the only thing we had while working with compute that I wanted to demonstrate. Um, the only thing we've left in this notebook is once this experiment gets finished training, finished running, then we would have gotten the metrics from the run, and we would have seen whichever files this experiment would have created. So now perhaps we can move on to the other part of the demo without wasting further time, which is creating pipelines. So again, in machine learning pipelines, we've already seen how it can make the code a lot more reusable. It can add a lot of modularity to your code. And again, the first thing I'm going to do is connect this kernel to the workspace. And we already have this data set in our machine learning um, environment. In our machine learning workspace, it shows that the data set is already registered. If it wasn't registered, it would have created that data set. Now we want to build a simple pipeline uh, in which we want to with which we want to basically train the same training model that we have been working with. Oh, so meanwhile that previous step is complete, and now we can see that the training was successful even with that compute target, and it trained a model with an AUC of 1 and regularization 0.1. And if we see the file outputs, we can see that it had a pretty good accuracy and everything, and it gave us that model file and a couple of log files that we can use, right? Okay, going back to building a pipeline. Uh, first thing, first things first, we want to create the training folder, and we want to create the training script. And this script is the same script we've been working with for a couple of experiments now. It always trains that logistic regression with decision tree classifier, right? Uh, so the training file is now created. Now what we want to do is uh, so basically this training script, we modeled this training script separately, but then the model that this training script will save on disk, if we want to register that in our workspace, we will model that in a we will write that out in a separate script, right? So each of these scripts will serve as individual steps within our pipeline. So हमारी पाइपलाइन कुछ इस तरह से आ रही है कि पाइपलाइन के अंदर पहला स्टेप ये है कि हमारा एक एस्टिमेटर जो है वो डेटा सेट से डेटा रीड करता है. After reading the data, it gets the run context. It breaks down the data set into training and test set. It adds the model, runs a model training, and after the training is completed, it saves the file to the disk, right? But then the second step in our pipeline is that the model that was saved on disk uh,
is loaded from the disk, and then the second step is just registering that model into our workspace with the following model name and giving it some tags. So we have these two steps in our pipeline. If we wanted, we could have broken it down into further more steps. For instance, calculating the AUC and accuracy could have been an individual step in which we would have validated our model, and this could have been done in a separate script, right? But it is up to the the developer working on the code. It is up to the machine learning engineer or the data scientist working on the code, how many steps he wants to break it in. But right now, we're working with these two steps, training and then registering the model. So first things first, for running the pipeline steps, we want to create the compute target. Again, we are working with the same cluster environment. And in fact, because, okay, I think I used different cluster name. All right, as long as we're making a new cluster, just to show you that that we can have different sort of settings here, I'll just add a main nodes example. So if I want to set my main nodes as 1 and max nodes as 2, I can do that, right? And with a different name, of course. So for the standard DS11V2 type, I want to create a new cluster, which would have at least one node available at all times. And at least one node is available at all times, but if the load on that cluster goes up, then it can have a maximum of 2 nodes. So let's wait for that cluster to run, and we have the pipeline steps also ready. The next thing we will be doing is we will be creating a run configuration for a pipeline. So for that, we'll need to create an environment with our Conda dependencies, and we've already done that in the previous notebook, in notebook 3a. We've seen similar code where we had instantiated an environment variable and set up the docker.enable to true so that it creates a Docker environment, define whichever dependencies we need for that Docker environment. For instance, we are going to need scikit-learn and pandas for this one, and Azure ML defaults and the data prep for pip packages. So we build that environment, we registered that environment, and for the pipeline run configuration, we create uh, a new run configuration. And for that, we set, for that run configuration, we bind the pipeline cluster that we created earlier with that run configuration. So हमारी run configuration के साथ हमारा create किया हुआ cluster bind हो जाता है, और हमारी उसी run configuration के साथ जो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी environment build की है, वो भी यहाँ पे हम अपनी उस run configuration के साथ bind कर सकते हैं. So the whole purpose of running this step would be to have a run configuration जिसके साथ हमारी मर्जी की एक environment attached हो और हमारी मर्जी का एक cluster attached हो, right? Or I guess it's still running. We can even see in the compute clusters space. कि जो पहले वाला मेरा पहले वाले even though मेरे पास clusters available हैं, now that they are free, you can see that they have gone back to 0 nodes because the minimum number of nodes was 0. But जो भी मैंने एक cluster नया create किया for with the minimum of 1 node, that is still resizing, so we'll wait for that to finish before we can bind the run configuration and the cluster to our environment. Right. So now that the nodes have been provisioned,
मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा अपडेट. सो नाउ वी हैव वन नोड अवेलेबल हियर. अब मैं अपनी एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता हूँ जिसके साथ मैंने ये क्रिएट किया और क्लस्टर बाइंड कर दिया. और ना सिर्फ ये क्लस्टर बाइंड कर दिया बल्कि मैंने जो एनवायरनमेंट अभी ऊपर क्रिएट किया वो भी मैंने इसके साथ बाइंड कर दी. और इसके ऊपर ऑल आई हैव टू डू इज नाउ, जैसे हम पहले कर रहे थे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटर डिफाइन करते थे और अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट उस एस्टिमेटर को दे देते थे. नाउ वी हैव टू स्क्रिप्ट्स, ईच स्क्रिप्ट डिफाइनिंग a separate step in our pipeline, right? So the first thing we're going to do is कि हम अपना एस्टिमेटर उसी तरीके से डिफाइन करेंगे और उसके अंदर अपनी एंट्री जो ट्रेनिंग स्क्रिप्ट है, जो जो फर्स्ट स्टेप इन आवर वो है ट्रेनिंग पाइपलाइन, वो हमने स्क्रिप्ट उसी तरीके से उस एस्टिमेटर को पास कर दी. हमने एनवायरनमेंट भी उसे पास कर दी, हमने पाइपलाइन का क्लस्टर और एक्सपेरिमेंट फोल्डर भी बता दिया. बट द एक्स्ट्रा थिंग फ्रॉम द last time, the difference here is we are adding two steps in our pipeline. हम एक estimator step ऐड करें और हम एक अपना Python script का step ऐड करें. The estimator step, what it does is it is going to run the training configuration. It is going to run the training script. It is going to uh, execute the first script और उस डेटा रीड करेगा, डेटा को प्री प्रोसेस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट सेट्स, मॉडल ट्रेन करेगा और एक मॉडल फोल्डर के अंदर आउटपुट जनरेट कर देगा. ठीक है. द सेकंड स्टेप इज अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट स्टेप जो कि सेम मॉडल फोल्डर से मॉडल को लोड करेगा, क्योंकि इनपुट के अंदर मैंने अपना मॉडल फोल्डर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जो कि मैं उस स्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट से रिट्रीव करूंगा. मॉडल फोल्डर से मॉडल को रिट्रीव करेगा और जस्ट उस मॉडल को रजिस्टर कर देगा. एंड हैविंग डिफाइंड दीज टू स्टेप्स, मैंने सिर्फ अपना नाम वहां पे बताया है, उस स्टेप का एस्टिमेटर बता दिया कि इस एस्टिमेटर के साथ बाइंड कर दो, इससे आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगी. एस्टिमेटर की एंट्री स्क्रिप्ट की जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफाइन कर दिए हैं. जो उसके अलावा मेरे डेटा के इनपुट्स थे वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं. आउटपुट्स के लिए इफ आई हैव एनी फोल्डर वो मैंने डिफाइन कर दिया है. कंप्यूट टारगेट के तौर पे whichever cluster, whichever compute target I had, even if I was running it on local, I would have defined that here. और फिर रजिस्टरिंग के स्टेप के लिए बेसिकली हमने अपनी सोर्स डायरेक्टरी, स्टेप नेम, सेम चीजें हमने इस चीज के लिए डिफाइन कर दी एंड वी रन दैट. So once we've defined the pipeline steps, it is now time to build the actual pipeline. और उस pipeline के through हम एक experiment run configure करके start करेंगे. So to build the pipeline, we have to have a list of all the pipeline steps in the right order. So you'll see the first in this Python list, the first thing object is our training step. The second is our registration step, right? And we list out all the steps here. And on these steps, we build a pipeline by using this package we imported from Azure ML pipeline.core. We're just going to pass them all the steps necessary, and that creates a pipeline object for us. Now, when we create an experiment and when we are going to submit that experiment, instead of that estimator object, what we are going to pass here is we are going to pass the pipeline here to the experiment so that the experiment runs on top of that pipeline. And I'll go ahead and run that and wait for it to finish. So the pipeline, first of all, submits, and I can go ahead and view the status from the portal. So मेरे experiments में जो मेरे blank notes ट्रेनिंग की pipeline है, उसमें you will see that
मेरे पास रफली उसी तरह ग्राफिकल तरीके से मुझे एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग अ बैंक नोट्स डेटा सेट. Then I have defined a training step in my pipeline, which is the train model, जो कि पहली स्क्रिप्ट को यूज कर रहा है, जो कि हमने अपनी जुपिटर नोटबुक के थ्रू राइट की थी. एंड देन देयर इज अ सेकंड स्टेप जिस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, एंड यू और वो एक सेपरेट स्टेप है इन आवर पाइपलाइन. सो जैसे हमने सबसे पहली लैब के अंदर डिजाइनर के ऊपर पाइपलाइंस बिल्ड की थी, this is somewhat similar to that. You can even visualize it in a very similar manner while it is executing. Uh, or even if after it has been executed, you can still see that this graph, and against this graph आप अपनी पाइपलाइन का स्टेटस, उसका जो प्रोग्रेस है वो भी आप मॉनिटर कर सकते हो. और इसे थोड़ा सा विजुअली जो है एक्सप्लेनेबल फॉर्म के अंदर, इफ यू वांट टू शो and explain your pipeline to some client maybe, or some manager who don't understand perhaps each and every detail about these things, then you will know a very user-friendly way of showing them your end-to-end machine learning code and how it is structured, and how um, each of those different steps is modularized. I am little bit confused here that you are submitting to I mean, you are first giving to the estimator this activity, then you are assigning this to the pipeline. Okay, assigning to pipeline, then I'm clear that it's showing you something that track that how can you monitor it. So what exactly the difference is? I'm unable to understand. So, Mr. Faisal, the difference is that when we weren't using pipelines, we wouldn't have been able to define all of these different steps as separate pieces of code. We wouldn't have been able to modularize that and develop each of those pieces of code independently. The whole purpose of having this pipeline separately and each of these steps defined separately is so that if this is a very large step or complex step, then perhaps I can give it to one certain team, and another team in parallel could be working on a different step, right? So that is the whole purpose of using pipeline. And once I have defined a step, I can perhaps even reuse it within the same pipeline if I wanted to. If I wanted to add a different data set and also use the model there, I could have done that.
Okay, so now that my pipeline run is complete, we can see that we were able to not only train a model but also register it using two different training scripts which we could have handed out to different teams, and using a modularized version of our code, we were able to run it as a whole, as a series of steps, uh, and we were able to train our model and register that. So for instance, uh, I want to verify the registration of that model that I registered. So I can see that I've run it once earlier, but I run it once again. तो अब मेरे पास जो उसका version है वो version 2 available, and I can use either one of these. एक बार मैंने वो pipeline create कर लिया है, then I can even publish this pipeline to be able to reuse that. और इसका maybe एक बार मैं पहले रन कर चुका हूँ, I'll run it again and save it as version 2. So I can save that like that here. और एक बार मैंने ये पाइपलाइन पब्लिश कर दिया, देन इसका मुझे एक रेस्ट एंड पॉइंट मिल जाता है. सो फॉर इंस्टेंस मैं वापस अपने जो MS स्टूडियो के अंदर आपको जाके दिखाऊं, देन मेरे पास हर पाइपलाइन रन के अगेंस्ट ना ये अवेलेबल है. ठीक है, इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं, क्या उसकी आउटपुट्स हैं, लॉग्स, मेट्रिक्स, इमेजेस, जो भी हम अपने एक्सपेरिमेंट के रन ऑब्जेक्ट के थ्रू लॉग करते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी. राइट. द अदर थिंग इज कि जो भी आपकी क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं, ये जो आपने एक एंड पॉइंट डिफाइन किया है ना, इस एंड पॉइंट के ऊपर यू कुड प्रोवाइड सम इनपुट डेटा, और उस इनपुट डेटा के थ्रू आप इस पाइपलाइन को आप यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली इसको यूज करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन कोई ना कोई चाहिए, जिस वजह से मैंने क्लिक डिड इट वाजंट एबल टू फंक्शन लाइक दैट. सो हमारे सेशन को ऑलरेडी इंटरैक्टिव लॉगिन ऑथेंटिकेशन मिली हुई है. हम उससे ऑथेंटिकेशन हेडर कॉपी करते हैं अपने ऑथ ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद what we're going to do is उसी REST इंटरफेस को हम कॉल करेंगे, और एसिंक्रोनसली हम इस पाइपलाइन को कॉल करके एक नई ट्रेनिंग जनरेट करके देखेंगे. So what we say is कि हमने once we've defined a pipeline, then it becomes so simple to run it कि हम सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट का नाम डिफाइन करते हैं, and then all we have to do is उस पाइपलाइन को रजिस्टर करने के बाद जो हमें एक REST ऑब्जेक्ट मिला है, we're just going to hit that REST endpoint with a post request, और obviously मैं उसके साथ अपनी हुई इंटरैक्टिव ऑथराइजेशन अटैच करूंगा, और JSON ऑब्जेक्ट के अंदर all I'm providing is the experiment name, and that's it. Once I run that, तो इसके अगेंस्ट एक नया पाइपलाइन रन जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपने पाइपलाइन के रन के अंदर, तो you can see that the run 3 is still running now. अभी 12:56, it is now 12:56. It was as simple to create a new training job with a pipeline. अगर मैंने पीछे से डेटा चेंज कर दिया है, और या फिर मैंने अगर अपने सोर्स के अंदर कोई ट्रेनिंग स्क्रिप्ट चेंज कर दिया, या कुछ भी मैंने छोटी मोटी चीज चेंज कर दी है, मैंने वो पाइपलाइन पहले से बिल्ड करके रखी हुई है. ऑल आई हैव टू डू इज नाउ हिट दिस रेस्ट एंड पॉइंट, और पूरी की पूरी पाइपलाइन रन जो है दोबारा से कॉन्फ़िगर होके एक नई रन आ जाए, और उसकी समरी में यहाँ से देख सकता हूँ कि उस रन के अगेंस्ट हुआ क्या. And this is how easier it makes to be able to reuse your pipelines, to be able to modularize your code, to be able to simplify and break down phases of your development, and even parallelize your development that way. So
with that, we conclude our demo. Or within the next 5 minutes, you will have access to the Azure portal with your आपके जो भी credentials आपको पहले provide किए गए हैं, जो आपका login password है, उसके साथ आप login कर सकते हैं, and for the whole day you will have access to the Azure portal. And in the Google Drive shared, you have both of these notebooks shared there. So perhaps if you want to tweak with the code, if you want to explore more options, you can do that. If there are any questions still, I can take them now, or when you are running those experiments in real time, if you have any question at that time, yeah, if you run into an error at that time, I can answer your questions at that time.